Yes, yeah, hi, how are you? I'm doing well. How are you? I am good too. Awesome. So, were you part of the workshop on Friday? Yes, yes. Oh, super. So, I hope the experience was insane and it, Yes, I learned some things that I did not know about at all. So it was definitely worth it. all right, awesome. So, can you tell me a little bit about yourself? Where you from? What you up to? What are your I'm from Ludhiana okay? and I am a graduate in fashion, basically, fashion designing from Pearl Academy, Jaipur. Oh, awesome. Pearl Academy. All right. Yeah, Jaipur. But then eventually, when I was working, like over the years, I found out that I was more interested in graphics because Hmm. I could work from home. So yes, so since lockdown, I've been doing trying my hands on Illustrator and Photoshop. Okay. Okay. Yes. So I have designed some logos and social media posts and some garment designs as well because we've Right. got a lot of hosiery knitting industry in Ludhiana. So Right. I've done a lot of designs for them as well, t-shirts and sweaters, etc. So Great. yes, I know quite a deal about both the softwares. Yeah. This So is great. that's. Mhm. And any queries you might have, and glad to Yes, know I was quite story. the thing that you told me that day that one should start making that you should start making case studies Yeah. because that's how you told us okay, it's a better way to tap a customer, like they'd be interested in seeing the journey the way you design it, right? So True. when I was checking out some case studies on Behance, I found out that a lot of people are doing logo grids, Right. but so far I've never done a logo on a grid. Like I've always been sure that my precisions are accurate and Through what's guidelines and supposed to be. yeah. Yeah, so can you tell me how is it important and does it make the work easier if I start doing them on the grids? Yes, it does. Yes, it absolutely does because what happens is when you want to print that identity, if you want to make sure that the logo which you are designing composition wise is right, or will it be printed on an outdoor hoarding? When you scale it up, there should not be a problem. When you print in a very integrate areas also, or very minute areas also, it should not be a problem. And through grid, you get a proper precise composition, to be very honest. Yeah. Without the Mhm. grid, it's judgmental. But now recently, I was doing a packaging project, and Mhm. in that project, even 0.3 or 0.5, like such sensitive centimeters or millimeters, also counts. Mhm. So using grids, you can control the area and have an output which has a better composition in terms of its proportion, in terms of its spacing, Mhm. etc. So it's all defined well with the help of grid. Okay, and of course it would look better on a case study. Yeah, and case More study is a professional. different conversation altogether. Case Mhm. study conversation is a conversation where today you need to grab attention of the people, which is the biggest challenge. So even now, if let's say you want to email me, but if you email me so many JPEGs or so many thumbnails or whatever, so many work, it's very Mhm. difficult for me to go through each and everything. But if you just email me case like n number of case studies, and I just go through even one or two, I'll get Mhm. your thought process, because these days people are more keen about understanding your thought process. What is your approach behind the project rather than just the graphic output? Yeah, that makes sense. Yeah, so I'm sure like with Pearl you might have already got that exposure, and this is just out of curiosity I'm asking you, like at Pearl you might have, because in Mumbai also we have Pearl, it's very nearby to my Yes, yes. Mhm. place, and we have been hiring from Pearl Academy as well for our agency. So it has been Mhm. a great experience with any Pearl student we work with, Yes. because their applied arts, their aesthetics, etc. All these fundamentals are pretty much clear. Yeah, yeah, that's right. That is why the other day when you asked that is anybody somebody who understands design, I was like, yes, that I know. But Yeah, because I did not enroll for a proper graphic designing course there. Like I told you, I yeah, was a fashion student. yeah, Yeah, so I had to figure out a lot of things by on my own when I passed out of the college. But we were given a good amount of briefing in the college, which really helped me, to right.
practice a lot. But now, if you want to start tying up with some agencies who are more into D2C brands, like they do work for some apparel labels or something like that, and start making real-time case studies, because that will help you differentiate from the other designers in the market. Yeah, that completely makes sense. Yeah, yeah, Okay, thanks for taking my query. yeah. Thank you so much, Naman. Means a lot. We have Amisha, we have Kaushik who have joined in. Varnita is already there. Hi Kaushik, how you doing, bro? Yeah, and if you can quickly introduce यस yourself. मैंने वो आपका Yeah, यस मैंने वो आपका जो लोगों का आपने एक्सरसाइज दिया था उसके right. बारे में कुछ सोचा हुआ और वो सारा ब्रीफ अभी मैं नहीं दे क्योंकि उतना इतना शॉर्ट कर पाया मैं हाँ. क्योंकि ऑलरेडी एक सेशन बुक किया हुआ था ट्रेनिंग का मैंने कुछ और चीज के लिए और आपका ट्रेनिंग और वो ट्रेनिंग मिक्सअप हो गया सेम अरे ओके. तो आपको जो फ्राइडे का सेशन था उसके आपके इनसाइट्स कैसे रहे? सब आपने जो टाइम स्पेंड करा हमारे साथ. बहुत बहुत मजा आया. मैंने पूरा नोट्स बना के रखा हुआ है. मैं हमेशा नोट्स बनाता हूँ. लाइक एक क्लासमेट का बुक है मेरे पास, मैं ऑलवेज रखता हूँ. नहीं. मतलब कुछ भी नया सीखने को मिलता है तो लिखता हूँ उसमें. बहुत अच्छे नोट्स बनाए उसके. ग्रेट ब्रो. इंस्टाग्राम पे है कुछ वर्क आपके केस स्टडीज डेवलप करते हो कि आपने अभी से स्टार्ट करना? ओके, अगर इंस्टाग्राम पे नहीं लोड हो रहा है देन मेरे डेस्कटॉप पे भी है. मुझे जस्ट अभी याद है. इन केस कोई पीडीएफ हो आप शेयर कर सकते हो, मे बी समथिंग नॉट फ्रॉम योर नेट. अमीशा, मीनवाइल आपके कुछ क्वेरीज? Achha, I had this another question. Yeah. I came across this video by a YouTuber, very famous one, Varun Maya. Yeah. Yeah, so he was talking about how AI is actually going to kill all the tiny graphic designers. Is that true? He's absolutely right. He's absolutely right, and that's the whole agenda. Even what we are conducting, the workshops we are conducting, you will see we are not talking about tools. We are not talking about just graphic design. We are talking about how you can become a problem solving designer so that you can understand the business objective of your client and serve the larger purpose rather than just sticking to designing layouts. Because yes, with the help of now you see Canva is making the jobs easy. Or even it's able to come up with so many options now. Yeah, so but who will come up with strategies? Strategy ultimately is our job. Like no Canva will give you a strategy, or no AI will give you a strategy. So brand strategy is something that you need to be strong with, understanding the problem statement of your client, who the consumer is, the user persona, and how do you come up with a proper brand positioning? How do you define a brand personality? How do you level up yourself in terms of copywriting? How do you come up with a better tagline? So it's copywriting is of course not mandatory, but yeah, so you need to upskill yourself as a brand designer and not just a graphic designer, is my saying also, to add to that Varun's video, because he's absolutely right in what he's saying. So what would you really tell? Like I told you that I actually started because of the reason of why COVID happened, right? And I can't say that like I've made a good amount of I've created good amount of things for money so far, but not so many that I can come to you and tell you that yes, I'm 100% sure about everything. I still learn when I take up new projects. I have to look up to so many videos, to see that how can I make this new thing and add it in my design. So what would you recommend for people like me? Like, should I fixate on improving my designing as well, or should are there some kind of tools? Is there a platform that the tools that are going to take over in the future? Should people like me be also trying to learn those tools which will help me? I mean, what I'm trying to say is Photoshop and Illustrator really going to become useless in the future? No, not at all. Not at all. AI, Adobe Illustrator, like no AI can replace this AI. So yes, Adobe Illustrator is the tool that you need to know, and Adobe Photoshop is the tool that you need to know. More than enough if you are a graphic designer. He mentioned this I think it was a software called Dolly.
Delhi or Dolly, yeah, you're right. Your Delhi, yeah. So although I did not get time to look it up on the internet, I Right. definitely have it on my list though. But I was quite disheartened to know about it. Yeah, but see, again, I'm saying now a client will not go to a Dolly or Delhi and start doing all that stuff on his own, on their own. Mhm. So they need somebody to do it for them. Now, coming to your role or my role or any creative person's job, uh, even we can use those tools to simplify our work. Maybe the way I said, place it. I'm not anymore doing Photoshop layering or smart objects, etc. Simple. I export a PNG, upload there, download a lifestyle image. So I'm using such tools for my leverage, but the ultimate goal is to serve a strategy to a client. So I am trying to give that the identity you saw of pro counts or maybe compliance simplified. So the agenda is to come up with thoughtful identity, thoughtful brand design system, complete identity system for a client and solve some problem for them, not just and or if I'm designing a packaging for them, how do I come up with a better packaging story with a strong storytelling. So storytelling is very important. We are communication people, we are communication designers, so visual communication is what we are good at. So focusing on that will help us level up and not the tools. Of course we need to upgrade ourselves with new technology, but we need to use that technology to meet our objective. And you cannot go out there and learn each and every tool. I don't even know half of things in Illustrator even today, so I use Illustrator to an extent that solves my design purpose. Mhm. Yeah, that So, makes so yeah, so my focus is not I'm becoming a master in Illustrator. My focus is that am I solving my client's problem if he's coming to me. Yeah. Because I am sure that you're always there to, take up such queries from people like us. I mean, Yeah. even if I have a question again. Yeah. Mhm. Okay, thanks for answering that as well. Absolutely fine. We have Kaushik back, I guess. Yes, Kaushik, buddy, tell me. So what is this interior bull? So it's like a scale which I can see. Um, यस that architect. एक महाराष्ट्र का कंपनी है मुंबई का Right. उनके लिए मैंने डिजाइन किया हुआ था तो उनको बुल भी चाहिए था और कुछ इंटीरियर डिजाइन रिलेटेड टच भी चाहिए था तो Hmm. मैंने ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया है उनको कि Hmm. लाइक रूलर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम लाइक Hmm. स्केल मेजरमेंट लेना एंड ऑल थिंग्स वो किसी इंटीरियर डिजाइनर के लिए बहुत रिक्वायर्ड मतलब मेन चीज होता है Hmm. 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 फिर उनको ये लोगो मैंने प्रेजेंट किया था देन अभी वो लोगो ट्रेडमार्क भी हो चुका है ये Right. रहा पूरा लोगो Okay. 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 उनका लाइन भी ट्रेडमार्क हो चुका है ये अब हो जाओ बेफिक्र All right. Okay. ऐसा मैंने कुछ बनाया हुआ है उनके लिए All आप right. आपके विजुअल या आपके कुछ कमेंट्स हो तो शेयर कर सकते हो इसके नहीं, रिगार्डिंग सबसे पहले तो आपने काफी अच्छा एफर्ट दिया हुआ है एंड मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बहुत सी एक वो भी रिसेप्टिवनेस लगती है कि चलो अगर मैंने कोई काम किया है तो उस पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या उसको और कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो आप हाँ रिसेप्टिवनेस रखते हो उसके लिए अगेन मैं आपको पहले तो अप्रिशिएट करूंगा एंड काफी अच्छा काम करा एंड ट्रेडमार्क अप्लाई भी हो चुका है तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी जैसे मेरा फ्राइडे के वर्कशॉप में भी कहना था कि हो सके उतना चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है आपके लोगों में जो रूलर्स हैं एंड प्लस और एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नीचे एरो का दिया हुआ है, प्लस वो एरो थोड़ा डाउनवर्ड्स जा रहा है रेदर देन अपवर्ड्स या ग्रोथ की तरफ जाने की जगह पे। ओके प्लस उसके अंदर की आईज भी आपने एक्स्ट्रा एड ऑन की है, मतलब एक बार उसके बिना भी समझ सकता, सब कोई भी समझ जाएगा कि हाँ ये बुल ही है, बट ठीक है हाँ आपने लेकिन ये फिर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था इसलिए हाँ मैंने ऐड कर दिया वापस से समझ सकता हूँ करना समझ। पड़ता तो अब ये कॉम्प्लेक्स हो गई है थोड़ी सी आइडेंटिटी, जबकि ओके आज कंटेम्प्ररी या आज के मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से हर चीज को हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करना इज द राइट अप्रोच। एंड इंटीरियर बुल्स आईबी को हाईलाइट जिस तरह आपने किया है इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, बट ये भी अभी बहुत कम लोग मतलब सिंबल को सेपरेट कलर देंगे, टेक्स्ट फॉन्ट को सेपरेट कलर देंगे एंड दे विल कीप इट दैट वे। फिर उसमें ये पहले हुआ करता था जहाँ पे एक अलग या एक कलर दिया जाता है कोई भी एक एलिमेंट को अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट हो तो, एंड अब हो जाओ बेफिक्र मतलब ये देख के
अब हो जाओ बेफिक्र ये क्यों बोल रहे हैं, इंटीरियर कंपनी की तरह इनका यूएसपी क्या है, तो ये सब स्ट्रैटेजिकली जाना बहुत जरूरी है। नो डाउट आपने आपके एफर्ट्स बहुत सॉलिड दिए हैं सबसे पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो तो है ही है, बट अगर हमें यहाँ से और इम्प्रोवाइजेशन करना है तो आपको थोड़ा और सिंप्लिसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। एंड कंपोजिशन वाइज मेरा ध्यान सिंबल पे ही पहले जा रहा है, एंड नाम और टैगलाइन पे बहुत कम जा रहा है, क्योंकि वो बहुत प्रपोर्शन वाइज उसको बहुत स्केल कर दिया गया है आपकी आइडेंटिटी को। एंड ये एज ए मैं अभी लेमैन मतलब जस्ट एक चलो फ्रेश कोई आइडेंटिटी में देख रहा हूँ, तो मैं मेरे हिसाब से मेरे पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ। एंड इसमें कोई वो नहीं है कि अरे नहीं, इट्स अ वेरी हेल्दी ये कन्वर्सेशन एक। राइट। तो मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे, या लाइक समटाइम्स क्या होता है, लाइक मैं कोई आइडिया शेयर करता हूँ या डिजाइन बना के शेयर करता हूँ, तो क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे पसंद है, ऐसा ऐसा बहुत बार क्वेश्चन आता है मेरे पास, लाइक मुझे ऐसा पसंद है तो आप ऐसा डिजाइन बना दो। उनको कन्विंस कर पाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उनकी पसंद मतलब उनको पसंद आ गया, दैट मीन्स अब उसके आगे कुछ बोलना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। अग्रीड। तो ये सिचुएशन से तो हम भी गो थ्रू करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं आजकल, नहीं मतलब इन रिसेंट टाइम्स नहीं करते हैं, क्योंकि आज जो अथॉरिटी है जहाँ पे डे वन से ही क्लाइंट को पता है कि इसको इसका क्रिएटिव फ्रीडम देना बहुत जरूरी है, या इनकी कंपनी को, तो फिर ये मतलब तो डे वन से ही हम लोग आज एक अथॉरिटी पोजीशन के साथ ही कम्युनिकेशन करते हैं। और दूसरी बात, हम उनको हमारा स्टेटमेंट यही रहता है उनके लिए कि आपके जो क्लाइंट है ना सर, वो हमारे लिए बॉस हैं। आप तो क्लाइंट इज किंग, नोट प्रॉब्लम, आप हमारे क्लाइंट हो, आप किंग हो, लेकिन आपके भी जो क्लाइंट हैं जो ये ब्रांड को कंज्यूम करने वाले हैं, मतलब अल्टीमेटली तो ये इंटीरियर बुल्स कोई तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्विस के भी तो कोई कस्टमर्स होंगे, तो उनको क्या पसंद आएगा ना, वो सर ज्यादा जरूरी होता है, रेदर देन मुझे क्या पसंद आ रहा है, आपको क्या पसंद आ रहा है। मैं नो डाउट मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उसकी कोई वो मैटर नहीं करता है कि मुझे क्या पसंद आ रहा है और आपको क्या पसंद आ रहा है, लेकिन 80% वो मैटर करता है कि जो आपका कस्टमर है, जो ये कंपनी प्रोफाइल देखेगा या जो ये वेबसाइट पे देखेगा, क्या उसको ये सही लगेगा, क्या वो आपकी ब्रांड को पहले प्रेफर करेगा कंपेयर टू अदर इंटीरियर पीपल इन द मार्केट, क्या उसको ये मैसेज आपका कन्वे हो रहा है जो आप करना चाहते हो। तो ये अब हो जाओ बेफिक्र इज लाइक यू आर टेलिंग देम टू बी स्ट्रेस फ्री, विच इज फाइन, बट एज एन इंटीरियर कंपनी है आ, कोई भी सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है पता है मार्केट में, एक इंटीरियर डिजाइनिंग या इंटीरियर फील्ड में, कि काम चालू तो होता है बट कंप्लीट नहीं होता है काफी टाइम, टाइम से खत्म नहीं होता, चलते ही टाइम रहता से है, खत्म चलते ही नहीं रहता है, होता। हाँ राइट, चलते ही रहता है। सो चलते ये मैं चलते। मेरा मेरा एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने भी ऑफिस में इंटीरियर्स करवाए हैं, काफी जगह पे काम किया हुआ है। तो सबसे बड़ा डर यही रहता है कि इंटीरियर डिजाइनर काम तो हाथ में लेगा, शुरू करेगा, बट क्या कंप्लीट करेगा। सो वी फिनिश व्हाट यू स्टार्ट जो होता है ना, वी वो हिसाब से अगर कुछ मैसेजिंग होती तो और कनेक्ट कर जाती है कस्टमर को या उनके कंज्यूमर को, कि नहीं यार ये अच्छी पोजीशन के हिसाब से, एंड देन आपका जो बुल है वो वो चीज कम्युनिकेट कर रहा है क्या, वो कुछ कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहा है कोई चीज, तो वो और वैल्यू ऐड करता। वैसे तो इस तरह मैं आपको एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, ये ना मेरी पसंद की बात है ना ये इंटीरियर बुल के ओनर के पसंद की बात है, बट ये एक मार्केट के डिमांड की बात है कि ये मार्केट में लोगों की डिमांड क्या है, ये मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उनकी उनके माइंड में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम हमारी आइडेंटिटी कैसे बनाएं, या टैगलाइन कैसे हो, या लुक एंड फील कैसा हो जो उनको कनेक्ट कर जाए, तो हमने यू नो जंग जीत गए वैसे। सो दिस इज हाउ आई वुड पुट समझ इट। गया। तो ये इस तरह जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं जब कोई हमारे क्लाइंट के साथ, तो वो डेफिनेटली हमें फ्री हैंड देता है, एंड हम हमारा भी डिलीवर करते हैं उसे, बट देन सी अल्टीमेटली यस इट्स देयर कॉल, बट दैट डज नॉट मीन कि हम उसे ए और बी डिलीवर नहीं करते। ए हम हमारा भी डिलीवर करते हैं, बी अगर उसका जेन्युइनली कोई ऐसी रिजिडिटी है कि नहीं मुझे ऐसे ही चाहिए, तो वो भी डिलीवर करते हैं, बट देन बताते जरूर है कि सर दिस इज व्हाट इज द राइट अप्रोच, एंड अगर आपने मुझे हायर किया है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये गाइड करना और ये बताना, बट देन अल्टीमेटली सर ऑफ कोर्स यू आर दी
फाइनल डिसीजन मेकर। तो उस वो तो फिर अपने हाथ, एप्लीकेशन अपने हाथ में नहीं है, अभी वो नहीं करेंगे तो फिर हाउ कैन वी रियली force someone, राइट। but at least we can show them समझ। our approach and convince them ये in जो that आपने way. पॉइंट बोला ना कि खुद के क्लाइंट के लिए बहुत रिक्वायर्ड चीज क्या है, वो बता, अगर वो बोलेंगे तो एक टाइम अग्री भी हो सकते हैं। अग्री भी होते हैं वो, ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ। राइट। एंड उनको एक रूट दे देना, ऐसा नहीं उनका जो है वो नहीं करना, तो उनको डिसएग्री नहीं करना होता है, उनके साथ अग्री करते हुए, राइट। उनके साथ अग्री तो करना ही है, ओके। उनको जो चाहिए वो भी डिलीवर करना है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी, हमारा भी डिलीवर करना है विद जस्टिफिकेशन के सर देखो ये भी इंटीरियर आपका जो कस्टमर्स है, तो हम जिस प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, जिस मैग्नीट्यूड पे करते हैं, हम तो काफी बार तो कस्टमर्स से भी बात करते हैं जो उनके कस्टमर्स हैं, अगर एग्जिस्टिंग है तो, अगर नया बिजनेस है तो अलग बात है। तो उस टारगेट मार्केट में हम जाके कम्युनिकेशन करते हैं कुछ लोगों के साथ, तो उन्हीं वहीं से पर्सपेक्टिव आता है कि इंटीरियर का दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि ये हो गया टाइम पे कंप्लीट ना होना इज लाइक ऑपरेशनल एक्सेलेंस, मतलब कि हम टाइम पे कंप्लीट करके देते हैं। दूसरा कैन बी कि हम आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं एज इंटीरियर डिजाइनर्स, हम आपकी जो पर्सनालिटी है या आप जो विजन माइंड में रखते हो वो हम आपके स्पेस में वो क्रिएट करके देते हैं, तो हम वो हैं। तो इस तरह ये एक दूसरा तरीका हो गया, तो जो मैं प्रेजेंट करता हूँ किसी भी क्लाइंट को, तो इस तरह अलग अलग ऑप्शंस के साथ जाता हूँ। ऑप्शंस मतलब लोगों के ऑप्शंस नहीं कि सर देखो विद रूलर विदाउट रूलर, उसकी बात नहीं कर रहा। ऑप्शंस कैसे है कि क्या सर हम इसकी बात करें कि ऑपरेशनली हम कितने सॉलिड हैं, तो हमारा मैसेजिंग ऐसा होगा कि वी फिनिश व्हाट वी स्टार्ट, मतलब ये वाले लीग में हम बात करेंगे, या हम ये वाले लीग में जाएं कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो प्रॉपर रिफ्लेक्ट होके आएगी आपके स्पेस में, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या हम ये रूट में जाएं, मतलब क्या ये तरीके से आगे काम करें, तो फिर एक डिसाइड होता है कि नहीं यार एक काम करते हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी जो रिफ्लेक्ट होती है ये वाला रूट बहुत मेरे कंपटीटर्स ने भी लिया हुआ है, या आप देखोगे स्टडी करोगे तो है, कर रहे हैं लोग। लेकिन ये जो ऑन द फेस चैलेंज की तरह लेना है, जैसे आज जेप्टो बोलता है 10 मिनट में डिलीवरी, तो जैसे एक एक ऐप है तो या एक स्टार्टअप है, तो जैसे ये हम कहेंगे कि नहीं वी फिनिश करेंगे एंड फिनिशिंग के साथ करेंगे वो भी, सो वी विल फिनिश एंड विद फिनिशिंग, तो ये कैसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी हो जाता है एंड कन्विंसिंग भी हो जाता है। सो राइट। राइट। दैट्स हाउ वी टॉक ऑन अ कॉल। अभी तो मुझे पता नहीं था, मैंने रैंडमली देखो आपने कुछ प्रेजेंट किया माइंड बहुत में, अच्छा सेंटेंस भी बहुत अच्छा बन गया, फिनिश करेंगे विद फिनिशिंग। क्योंकि होता है वो कुछ चीजें आधी अधूरी रह जाती है फिनिश करने के बाद भी, तो वो एक दूसरा ये कहाँ से आ रहा है आइडिया, कहाँ से आई आइडिया, कस्टमर के पेन पॉइंट से आई कि जब मैं भी कस्टमर रहा हूँ ना एक, मतलब मैंने भी करवाया है ये सब, तो मैं गुजरा हूँ कुछ चीजों से, तो वहां से मुझे पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं। अगर मैं शायद उस चीजों से नहीं गुजरा हूँ तो मैं उन लोगों से बात करूंगा जो उस चीजों से पास ऑन हुए हो, तो मैं अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊंगा मेरे पॉइंट को। मतलब एंड कस्टमर अगर हैप्पी तो हमारा कस्टमर भी हैप्पी और फिर हम भी हैप्पी। एग्जैक्टली तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। यस नमन। I wanted to ask you something about packaging design. So I'm going to get one project in I think 2 weeks time. तो मैं first time packaging design करने वाली हूँ. तो जितना मेरा experience है मेरे उसके साथ illustrator के साथ, मैं I'm sure कि I'd be able to present them in a good way. But I know, although I've not tried it yet, कि Photoshop में 3D packaging और ऐसा सब हम दिखा सकते हैं. हम्म। इन दोनों के अलावा कोई और सॉफ्टवेयर है विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अ विजुअल प्रेजेंटेशन क्लाइंट के लिए जो यूज करना चाहिए फॉर पैकेजिंग डिजाइन? इफ यू कैन रिपीट अ लिटिल, क्योंकि मैंने कुछ आई लॉस्ट यू इन बिटवीन व्हाइल यू आर हैविंग। सो आई वाज टेलिंग यू दैट आई नो कि इलस्ट्रेटर में मैं पैकेजिंग डिजाइन उनको प्रेजेंट कर पाऊंगी जो भी ओके मैंने उनके लिए बनाना है। तो इट्स सम फूड कंपनी, तो दे वांट सम पैकेजिंग एंड स्टिकर्स फॉर देयर जार्स एंड ऑल. ओके Right. So I was asking you that although I've not tried it yet in Photoshop, but I know कि 3D packaging आप दिखा सकते हो Photoshop में. या Actually apply to a jar and all. But इसके अलावा भी कोई और सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप थोड़े बेटर इफेक्ट्स दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन के लिए, आई मीन
Photoshop या I mean there's this After Effects that I've never used so far. Right. उसमें क्या होता है? Is it used for packaging design or No, you don't need After Effects. After Effects is for motion graphics. आप Photoshop में ही वो कर सकते हो. एंड उनका क्या प्रोडक्ट है उसके बेसिस पे आपको ग्राफिक बर्गर है या फ्री पिक है, वहां से काफी ऐसे मॉकअप्स भी आपको मिल जाएंगे जिसको यूज करके आप उसे उस पर अप्लाई करके फोटोशॉप से ही रेंडर करके प्रेजेंट भी कर सकते हो. एंड अगर आपको जेन्युइनली अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करना और अच्छे आउटपुट्स देने तो आप प्लेस इट यूज कर सकते हो. इफ यू वांट आई शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ एंड शो यू के कितने अच्छे उसके. जस्ट इन केस आई एम नॉट हियर प्रमोटिंग एनी टूल, मेरा तो कुछ है नहीं उसमें, बट जस्ट एज a guide ke if you want to save your time, or else Photoshop is more than enough and mockups are more than enough to showcase your packaging. Yeah, but still let me show you what I mean. अब देखो मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे. Can you see this? yes. हाँ बिल्कुल. So these are the mockups. Yeah, it's so simple that आपको बस PNG वो dimension में upload करना है और download करना है. Now depends on the type of packaging you are looking for, वो अलग बात है. So without putting much effort in executional work, in the sense your effort should go in thought process, creativity, ideation, brief, defining the brief, giving them good storytelling or a good experience. So does this website has like better options? Free pick वगैरह मैंने करा हुआ है use पहले. Yeah. So compared to that, like does it has better options? Definitely, all the case studies which you are seeing on our portal are all place it driven, and not all, but yeah, maximum place it driven work. And if you are talking about packaging, let me show you one thing. Hold on. So yes, it has great options. If you see it here, now the logo is not designed by us for this particular brand. It's loading. Just give me a second. But here we've invested our time, energy in. Now it's a walnut product, walnut akroot. So they have this product that they export. Walnut, they export these walnuts, and walnut looks like a brain. Akroot is equal to a brain, is what I feel. Even their feel is like a brain. So we gave this tagline, which is a genius in a nutshell, for a walnut product. So a genius in a nutshell resonates so well क्योंकि वो है भी एक nut and in a shell, and nutshell in the sense simply genius. So because if you eat this आपका दिमाग better होगा is the product का feature. So we invested our time in creating such concept, या किस तरह इसको एक दिमाग खुल मतलब bulb and दिमाग खुलना kind of a scenario. तो वो उस पे ज़्यादा time we invested rather than and this mock-up which you see or is all through either Placeit or Photoshop or free pics that you have to make it more realistic and better looking. It's very, very beautiful, I must say. Yeah, but I feel it can be more simplified, but yeah, then depends on the client requirements and a lot of details that they want. So yeah, genius in a nutshell. So this is how you need to be a. Now this is something which AI will not do for you. Adobe Illustrator or even your AI, which is the new tech and all that. So you use those things to bring your vision into reality. But don't be afraid that they'll take your job. They'll only take your job if you are just a software person. Yeah, exactly. That is what I wanted to understand, that what is it that I should actually start applying in my work that would not, keep me in the corner when it actually comes. And also, but I hope now I was able to justify that point. Yes, it makes complete sense. Great. Also, I wanted to ask you, okay, now it's a time, in these times, videos are becoming very, common. Right. Instagram maybe, which was once just a image platform. Right. And a platform for very good images, like Pinterest as well. Now it is all about reels and what do they have? Idea pins on Pinterest,
ऐसे में एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए क्या मोशन ग्राफिक्स जानना इम्पोर्टेंट है? लाइक बिकॉज द क्लाइंट्स हु नाउ एवरीबडी इज कमिंग मेकिंग पेजेस ऑन इंस्टाग्राम Hmm. एंड आई हैव आल्सो हैंडल्ड अ फ्यू फॉर सम क्लाइंट्स ऑफ माइन, उनका टाइमली पोस्ट करना एंड दिस एंड दैट, राइट अप्स, कॉपीराइट वगैरह, वो सब सर्विसेज भी मैं दे देती हूँ बिकॉज लाइक आई एम okay with English and I am good at research. Basically that's one of my strongest points I feel. तो बट मेरे को अब ये लगता है कि व्हाट इफ पीपल कम टू मी इन नियर फ्यूचर एंड टेल मी कि क्या आप कुछ ऐसे विजुअल ग्राफिक वाला कुछ दोगे व्हिच इज नॉट जस्ट अ स्टिल ग्राफिक बट इट्स अ लिटिल वीडियो, अ क्यूट वीडियो, दिस एंड दैट, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट आफ्टर इफेक्ट्स, सो शुड आई स्टार्ट लर्निंग इट और व्हाट? Now it differs from your. It's all about your choice, your vision. But yes, static is not that great these days. It's all motion. And now again, with respect to in my case, now I don't know motion graphics personally. Like if I sit and do motion graphics, I'm not a great motion graphic guy. I think you have people doing it for you. I'm not there yet. Right. So eventually, it was not on the day one. Eventually, I I have people doing it for me, yes, but eventually. And similarly, what if I also started as a freelancer on day one also when I never, okay, I don't know motion graphic, that's fine. I started learning. I know that does not mean कि मुझे आता ही नहीं After Effects. I do it, but I'm not that great in that. So I prefer knowing it to an extent that okay, which justifies that yes, I do have some knowledge. But then I collaborated, in back then also I used to collaborate with fellow motion graphic people, or who are more focused in that. So as I said, it's all about the choice because you cannot keep on going and learning and learning and learning. Like, don't get me wrong, you keep learning new tools. I'm not denying that, but somewhere you will have to then हाँ, find your what you're focus. saying exactly, यही तो मेरा पॉइंट था कि भाई पहले ये सीखा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी, अब ये सीखा, अब ये आ गया, मतलब सीखते रहो या करोगे कब? Yeah. So you can seek होना ऐसा नहीं ऐसे सीखते रहो, but then you cannot go and build your expertise in each and every software, right? Because you need to do that thing repeatedly to become an expert and practice that so many times to become an expert. Now, if you keep on changing your this thing again and again or tool, so you should know to an extent that you have the insights. When I know that I'm collaborating with a motion graphic guy, I know what he will do while rendering, what are the issues, or what is H.264, point H.264, how do you render in that. थोड़ा बहुत मतलब knowledge है, so you should have some knowledge. But then you should start collaborating with the right people for the right task, even as a freelancer, even as an independent person, and you should not do everything on your own, is what I believe. And you should find your core. That when I came to know that okay, I'm good at strategizing, I'm good at ideation, I'm good at conceptualization, I'm good at creating, I'm solving problems for a client, cracking briefs, pitching presentations. So I started focusing on those skills because they are timeless, they are universal. Like उसका वो तो कभी नहीं जाने वाला. आपको कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा इज फॉर ओनली वन थिंग, विच इज आइडिया एंड डिफरेंशिएशन, and how you are able to give me something which is so unique. Now you saw genius in a nutshell. So Yes. people come to us for a genius in a nutshell. So they don't bother that Vivek ko Illustrator aata hai ya After Effect aata hai. They want something kick-ass from me, something unique, something different from me, or from us, or from our agency, or from our team. And then he doesn't give a damn if it's you doing it, if it's your plus one person you have deployed doing it, or you have collaborated for motion, you have outsourced some tech work to somebody. That is our call. Now you will say I'll go in an Adobe XD also. UI UX is very important, and then I'll I know. start learning Figma, Adobe XD, and start learning. Exactly. Yeah. So, But then you do now, you explore. No harm in exploring, no harm in going through all these domains. But then you eventually see what's giving you a kick, or what's making you, like, what's fun for you, what you enjoy doing. And I don't enjoy rendering and editing the way I enjoy scribbling, thumbnailing, brainstorming, talking to you guys like this, or having a jamming session with a client, cracking ideas on the go, like literally like this. While having such conversations, I can go on and on with you. Even right now, you give me a brief, and I'm sure that I'll be able to come up with something at least.
So that's what I keep doing. Now this will never change. Any tool comes, this will never change. So I'm focusing on this. Mm-hmm. No, but that's right. Like, if somebody who's able to think about things, for example, why am I sticking up to it is only because I know that I have learned all of this right back in my college. I've understood it. They fed it in us like so well कि किस तरह से डिजाइन होता क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या देखते हैं, how to, use the least of it, how minimum is the maximum and this and that. So फिर वही I can understand what you are saying exactly. But yes, this is a very good thing that you just told me कि have insights about things कि जब मैं किसी से ये काम करवाऊं तो मुझे पता तो हो एटलीस्ट कि वो क्या करने हाँ, वाला है. वो बहुत जरूरी है. Now I हम्म. know what do they do in Figma or Adobe XD. I know what is wireframing and how will they do it. I do know what will they do in After Effects to create some, um, how will they use a plugin. So I do know all that, and for once I should know, or else it's very difficult. ये भी necessary नहीं है. See, again I said it depends on, but हाँ पता होता है तो coordination easy हो जाता है if you are even collaborating with some. Plus for somebody who can learn software उसके लिए तो एक add on ही है ना कि उसको पता हो. Yeah. You can keep going and learn software. Of course, you should. But इतना ही है कि then somewhere down the line, please focus on. Making money. वो तो बाय प्रोडक्ट होगा ही, and making money is very important. But एक domain that I am reaching out to Naman. I'm calling Naman for what? Like, okay, I'm calling Naman because I know that she's the best motion uh, girl or the lady motion graphics. She's great in that, and I'll reach out to her only. I have taken care of the graphics copy. Now I need to call her for motion. Or she's great when it comes to consumer journey UI UX. Let me call her and get the UI done from her. So why will I give you a call? So a generalist, Mhm. being a generalist is good, very good, and but at the same time, in the initial stages it's fine, but then expertise in a particular domain is what I'm asking for. Yeah, that makes total sense. Yeah. Thank you. सिमिलर क्वेश्चन एक मुझे भी पूछना है वीर भाई आपसे. Yes, Kaushik bhai. ठीक है. लेट्स से कि हम मैं लगभग 2019 की बात कर रहा हूँ. तब स्टार्टिंग में मतलब मेरे पास एक क्लाइंट का काम आया था. उनको ऐसा एक प्रोडक्ट मतलब उनका प्रोडक्ट था घी, देसी काऊ घी, राइट. तो फिर हम लोग ने उनको एक आइडिया दिया कि लेट काऊ की घी का बॉटल ऐसे बनाते हैं लाइक मटका मटका हो उसके ऊपर जो जिससे हम लोग पुराने टाइम में लेडीज वगैरह उसको गोल गोल घुमा के गुजराती में उसको वलोना बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं उसका वर्ड क्या है. तो हमने ऐसा कुछ आइडिया दिया, लेकिन उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुआ था कि लाइक सेम चीज हमारे माइंड में है, हमने पेपर पे स्केच भी ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसको पूरा सभी एंगल से 3D बना के दिखाना था. तो उस टाइम पे मैंने ट्राई किया कि लाइक मैं 3D सीखूं एंड ऑल. 3ds Max, Maya, all those software. हाँ, बहुत मतलब बहुत लंबा हो जाता. फिर मैंने सोचा कि नहीं, किसी पर्सन को हायर कर लेते, उनको आइडिया शेयर करते और वो हमको बना के देंगे. Exactly. You focus on what you are good at. Simple as Right. that. You can't Right. keep on going on and on. क्योंकि उस टाइप का कोई मॉकअप भी अवेलेबल नहीं था कहीं पर, तो बस दिखाए तो कैसे दिखाए लाइक डिजाइन ऐसा होगा एंड ऑल. Right. तो उस टाइम पे हमने एक 3D डिजाइनर को टास्क दे दिया था ऑनलाइन. Perfect. And he'll just focus on those renders. Simple as that. He does not have to bother on के क्या ब्रीफ है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सब आपने कर लिया. अभी उसको बस जो उसको टास्क दिया है वो रेंडर करना है उसने, और क्या. हाँ, राइट. इसलिए तो ये सब AI आ रहे हैं. So that हर कोई बटन दबा के काम कर ले. बट स्ट्रेटेजी कौन देगा, आइडिया कौन देगा, वो तो हम ही देंगे. ठीक है. Superb guys. It's always fun interacting and jamming with you all. I hope even today was insightful. Can I show you some logos that I've made? Like there are so many, but मैं बस 2-3 JPEGs ढूंढ रही हूँ ताकि मैं बस screen share करूँ. I so wish कि मेरे पास case studies होती और मैं आपकी I swear I so regret it. ढूंढो JPEGs ढूंढो, बट बनाओ एक PDF रेंडर करो. आप तो यार पर्ल से हो यार, you should have, मतलब आप तो
हमसे बेहतर बनाते हो? नहीं, हाँ बनाती मैं बहुत अच्छा हूँ, बेहतर नहीं कह सकती मैं। आई वुड डेफिनेटली नॉट डिनाई कि मुझे काम नहीं, नहीं in the आता, sense हमसे काम बेहतर मुझे इन द आता है, सेंस बस मैंने क्योंकि किया नहीं हुआ। इतना सिग्निफिकेंस है उस चीज को वैसे। हाउस योर ओवरऑल फीडबैक मीनवाइल कौशिक भाई या नमन, जैसे हम जो प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं मार्केट में स्टेप जीरो एकेडमी के साथ के डिजाइनर्स इंडिया में लेवल अप होने चाहिए, क्या ये सही है? क्या हम सही जा रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा, आप बहुत सही सिखा रहे हो, बहुत सही मैं सिखा रहे आपके कोई ऐसे पॉइंट्स पेन पॉइंट्स हो जो हम जिस पे कंटेंट बना पाए ऑनलाइन, कुछ चीज जो हम आपको दिक्कत आ रही है वो हम सॉल्व कर पाए? हो। हम बेसिकली मैं गुजरात अहमदाबाद में रहता हूँ। यहाँ पे मेन चीज ये कन्वे कर पाना, मतलब लाइक उन लोग का क्या ऑलवेज यही क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे लोगों से, क्लाइंट से इंटरेक्ट हो चुका है मेरा, तो उन लोग यही बोलते हैं कि लाइक वो इतने में करके दे रहे हैं, आप क्यों इतना हाँ चार्ज वो कर रहे हो। हम्म, वो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है यहाँ अभी वो फिलहाल गुजरात अहमदाबाद के लिए। राइट। वो हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि वहीं पे। फिर हम पूरा समझाते हैं कि लाइक वी आर, हम क्यों इतना चार्ज कर रहे हैं, जो भी चार्ज है उसका जस्टिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें बता। लेकिन आपने बहुत अच्छा सिखाया है कि लाइक उनको पर्पस समझाना है कि क्या है, हम लोग क्यों इतना चार्ज करते हैं। क्योंकि हमारा हमारा फिजिकल प्रोडक्शन या कुछ एसेट्स है नहीं, हम जो भी अर्निंग करते हैं यही काम करके कर सकते हैं। तो दैट्स, यही एक चीज दिखा इसमें ये सकते भी हो। है कि हमें मोर देन हमारे बारे में उन्हें ये समझाना है कि हम जो बनाएंगे वो इतना कॉन्फिडेंस है हमें कि आपका अगर पानी का बोतल बन रहा है मार्केट में उतर रहा है तो कोई अगर दुकान पे रखोगे तो आपकी बोतल पहले पिक की जाएगी, तो हाँ, आपका सेल्स वहां बढ़ेगा। इतना मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि इतना आज मुझ में एक्सपीरियंस है, और हम्म। एक्सपीरियंस का और उस वैल्यू जो आपको मैं देने वाला हूँ उसका मैं चार्ज कर रहा हूँ आपसे। राइट। ये एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा लर्न करने के लिए, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी ये एक पॉइंट था जो मैं कहीं पे भी कभी भी नहीं सीख पाया लाइक। और और आप आपके उन्हें, हाँ सेशन से मुझे बहुत पता चला ये चीज। उन्हें बिजनेस लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट करना है हमें कि किस तरह राइट, आपका राइट, सेल्स बढ़ेगा, या कलर्स फॉन्ट हमारी मेहनत होती है वो ऐसे वो सब उनको कुछ मतलब नहीं होता, उन्हें बस यही राइट, 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 भाई सेल्स होगा कि नहीं। राइट। द काइंड ऑफ पीपल यू आर मतलब टॉकिंग अबाउट उनके बारे में कह रहा हूँ, सो इट डिफर्स फ्रॉम क्लाइंट टू क्लाइंट, कंपनी टू कंपनी। अच्छा, एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू नो कि क्या चार्ज करना है? लाइक ऑब्वियसली एक तो साइज ऑफ द वर्क पता चलता है, उसके बट बारे में मार्केट में सर्विस चार्ज क्या चल रहा है, कंपैरिजंस, ताकि कोई क्लाइंट कोई सस्ता देख के ना चला जाए। आई मीन इट्स फॉर द पीपल हु हैव नॉट रीच्ड वेयर यू आर। आई मीन ऑब्वियसली समबडी वुड कम टू यू विलिंग टू स्पेंड दैट मच, राइट? no, it's about, see, everybody will have a same problem at their stage. I have this problem even today at our stage. At a freelancer, I had the problem at freelancer stage. So वो problem तो रहने ही वाला है. For that, I have almost 20-30 minute video on YouTube. I'll share that link with you. It will answer all that at length for you. प्लीज डू दैट, Yeah. बिकॉज अभी तक जितना भी देखा है सुना है वो वही होता है कि वो आपके एबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है, वो आप डिसाइड करोगे हाउ मच, बट दैट्स नॉट रियली ट्रू। मतलब फॉर दैट यू एक्चुअली हैव टू बिकम दैट फेमस, यू नो, कि पीपल नो यू कि ओके सो दिस इज नमन, इसके पास जा रहे हैं बेटा, सोच के जाओ कि बढ़िया काम देगी मगर पैसा भी अच्छा चार्ज करेगी, यू नो। तो वो वाली चीज अभी मैं पहुंची नहीं हूँ। दैट इज व्हाई। I'll share something with you on, like, for everybody. I'll share on the WhatsApp group. Yeah, Uh, please do it's that. on my YouTube channel only. You can go to @ my handle, Insta handle or the YouTube handle, Mr. Brand India 21. वहाँ पे आपको काफी वीडियोस मिलेंगी जो ये सब क्वेश्चंस के इन लेंथ में आंसर करनी है. Okay, I'll definitely do that. I did not. Going on the chat box. हम्म। अच्छा, so now can I share my screen please? JPEGs है तो वो Yeah, don't like we'll do not it. think about Yeah. that, but जो भी 4-5 मुझे फटाफट मिले, I'm trying to. Oh yeah. Access is there. You can share. Okay. हम्म। Then we'll. हाँ जी, तो can you see it? Wait, let me begin with the very first. Wow. So this was my first ever logo. So this girl needed मतलब ये बेकरी का स्टार्टअप कर रही थी ड्यूरिंग लॉकडाउन। Hmm. बेकरी, शी वाज नॉट वेरी श्योर कि बेकरी ही थी तब। शी यूज्ड टू कुक वेरी गुड मटन बिरयानी एंड दिस एंड दैट, तो उसकी 2-4 आइटम्स ही थी।
एंड बेकिंग में सब कुछ था, तो फिर इसको स्पेसिफिक टू बेकिंग नहीं चाहिए था, दैट इज व्हाई आई डिड दिस प्लान फॉर हर, जिसमें से खुशबू आ रही है, एंड देन शी टोल्ड मी कि उसको कुछ बेकरी से रिलेटेड चाहिए, सो आई मेड दिस आइसिंग का सर्कल एंड फ्लावर्स, यू नो, टू बिकॉज पॉपी इज अ फ्लावर, तो उसको नाम पॉपी कुक्स रखना था, तो ऐसे वाला। ऑल्दो अब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड हैव डन different things, but ये पहला लोगो था, तो you know. I appreciate it. I appreciate it. Any given day. Yeah. It's great. But now I'm sure that you know fundamentals, so you might validate your own self कि नहीं क्यों font ऐसा नहीं चलेगा, या readability, या क्यों Exactly. Yes. complications of the flower and वो जो stroke आपने दिया है कुछ, तो वो issue कर सकता है, क्यों हाँ हाँ. consistency नहीं है इसमें strokes में, तो that is another thing. So अभी but ये सब तो ठीक है, but I should first appreciate your effort, and ये भी एक task है, like you have done it, you started out, it's great, and now of course you know the fundamentals, तो आप इससे better ही करोगे अभी. Yes. Yes. Thank you. Yeah. Okay, so this was another one that I did for a girl who was selling block printed garments from her home. Right. Online basically. तो ब्लॉक प्रिंट का फिर मैंने ऐसे उसको फ्लावर का डिजाइन, लाइक दैट्स व्हाट शी सेड, एंड वो क्लोजेट वाज द नेम, सेलिब्रेट योरसेल्फ टैगलाइन था, तो ये मैंने उसको ऑप्शंस दिए थे फॉन्ट में एंड द डिजाइन. आर यू लुकिंग एट देम? I'm thinking. I'm just not looking, I was also sketching at the same time. Again, the same thing, Naman, over here as well. The tagline is too far away from the main logo. The suffix is bigger than the BOW. The closet could have been minimal. The or wow closet and celebrate yourself could have been in a Proportion. hierarchy. So that's the thing. And again, the minimalism is lacking over here. So these are like very early design of yours that you are showing. Yeah, lockdown designs. Yeah, because as you have seen on the Friday, the session that we took was might have solved this query already, where how you should first come up with a story or a messaging, and then on the basis of that messaging, you design the identity. Yeah, that's true. But इस वाले में मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बहुत ज्यादा she was rigid कि मुझे नीचे ही चाहिए, यूं पूरा उसको कवर I करना चाहिए, understand स्क्वायर that, में आना चाहिए. and we already discussed that with Kaushik के किस तरह उनका वर्जन भी देना चाहिए, and then हमारा वर्जन भी justify करने के लिए उन्हें देना चाहिए, and then it's their decision. But yeah, good going. Like I love the pastel one on top right. This one? Yeah, comparatively. This is the one she selected, you know. Okay. Color wise, that's soothing. And there was this. It was a trims guy. There's this trims wholesaler in Delhi. Okay. So button zippers and all sort of trims. So its name was DJ Trims. तो फिर मैंने इस बटन को बस इतना ही, मतलब उनको मिनिमल, मतलब इनको कोई वो नहीं था. He was like कि आप अच्छा बना दो, बस अच्छा सा हो जिसको मैं हर प्लेटफॉर्म पे भी यूज कर लूँ, प्रिंट भी हो जाए और अपने बैकड्रॉप वगैरह पे भी लगा लूँ फॉर फोटोग्राफी एंड. Yeah, quite simple. Like at least this is simple and clean. But then readability will be a problem again. मतलब DJ trims, I don't know. It should have been थोड़ा और, तो ऐसे semi circle में आता top पे तो फिर भी readable हो जाता. I don't know, on a mass level. You mean like here, right? As a designer, I can still take an effort, but not the masses. Yeah, and these dotted lines can create some problems while printing maybe. Okay, but I was trying to show a button, तो वो Yeah. thread का, you know. बाकी cool है. Threads और trims ऐसी चीजें भी होती हैं, तो फिर इसलिए. Needs work, मतलब वो everything needs work, because now again the same problems are everywhere. Simplification is important. Things are complicated. Gradients create a trouble.
रीडेबिलिटी। बट ये ना उसको सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए और घर के बाहर मतलब बुटीक के बाहर बोर्ड के लिए चाहिए था। Still, again, that's what I'm saying. Your approach only should be के चाहे कोई भी हो, किसी के लिए भी करूं, बट उनके कंपटीशन को स्टडी करूं, उनके कस्टमर को स्टडी करूं, उनसे क्या कनेक्ट कर जाएगा, वैसा क्या कॉन्सेप्ट क्रैक करूं, एंड देन वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आइडेंटिटी डेवलप करूं। ओके, तो अब इसमें फॉर एग्जांपल यही जो है, इसमें आप क्या करेक्शंस या चेंजेस मेरे को सजेस्ट कर सकते हो? बुटीक आप बोल रहे हो कि इट्स वेरी थिन, द फॉन्ट इज थिनर। एंड आई डोंट नो हाउ द एप्लीकेशन विल बी। अगर इसका मुझे साइनेज करना हो तो, मतलब मेरी बुटीक के बाहर मुझे वो एक लाइट वाला साइनेज लगाना हो तो आई कैन ओनली यूज द जीप्रीत फॉन्ट आई गेस, जो एंड बुटीक इन एंड देन दैट ग्रेडियंट बटरफ्लाई वो सब तो आएगा नहीं। वो तो या तो मुझे एक वो या प्रिंट करके बैकलिट देना पड़ेगा इसको। सो हाँ हाँ, उन्होंने एक्चुअली बैकलिट ही बॉक्स बोर्ड ही बनवाया है, नॉट वेरी बिग दो, इसलिए थोड़ा स्केलेबिलिटी और इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस बट उन्होंने वो बैकलिट वाली। जेनेरिक है, मेरा ये फीडबैक रहेगा। मैं अभी उस पर तो फीडबैक नहीं दे पाऊंगा कि आपने ये इसको बड़ा करो, इसको छोटा करो, एक्सेट्रा। इट्स जेनेरिक इन द सेंस के we have seen people do this, but how can this be different? Because why do we do identity or branding? We do it for differentiation. मतलब हम 10 जन से हम कैसे अलग हैं, तो वो ही फैक्टर अगर निखर के नहीं आ रहा है, then your end objective is not being solved. But again, let me see. I'm here. It's a healthy conversation that we are having. Of course, you have done super work, so ऐसा नहीं है कि and everything takes effort. I am a designer myself. I understand. And at Cole I have had so many mentors to tell me, Naman, no, not this but this, but ये तो मैं खुद random कर रही हूँ and people at masses are liking it, but then there are always every kind of person, somebody likes it, somebody does not. So this Doesn't. is for the first time कि मैं आपको like I've got you here to actually give me feedback on these And things. my feedbacks will not be on very micro level where please increase the space or do that, etc. My feedbacks will always be on a macro level जहाँ पे who is Gpreet, what is the boutique all about, what is their USP, is that USP reflecting in your design anywhere? Yeah, because it's all about embroideries and butterflies and flowers and this and that. So this is some kind of embroidery that she really loves, and she is always into ombres, तो इसलिए मैंने ये दिया था उसको Great. gradient, because ombres था उसका। तो अच्छा, वैसे भी ये वाला gradient, like you said, it will only come on a light board, right? In any other media तो ये अच्छा ही नहीं H&M लगेगा। and ZARA has that ability to, the typo has that simplicity to become an acrylic light board, like they are embossed and independent on their own. Now, this will always need some white base and backlit thing. So it depends. So scalability of the logo is important. But again, as you said, the purpose was only very limited. So I understand. Right. And this one was for an eye hospital. Right. Vikram. So I This is didn't. good. मतलब Your vision are this was focused. the only place that I thought I could, play with. ये जो मैंने इस तरह से थोड़ा इसको color में कर दिया. Otherwise तो सारा फिर. And the font, I was really obsessed with this font क्योंकि it's a पुराना. Bodoni. Bodoni. Uh, yeah, I think so. I'm not very sure. It's इसमें भी Bodoni. although I had made changes in it, ये सारे मतलब I had made changes in the font as well, but that was the base font basically. Again, very simplified and very clean one, comparatively from the previous ones which we have shared. So yeah, this is very compact and clean. And why did I use this font was because to me I think that ये एक बहुत ही पुराना font है जो हमने बहुत ही classic magazines और print और ऐसी चीजों में है ना, देखा हुआ है. बिल्कुल है, बोडोनी तो है Time ही I was born, and the uncle whose son got this logo made from me actually opened that hospital. So he's basically very old, and इसलिए I thought that it'll completely resonate with the time from when this they are giving their services. है. Cool, that's absolutely fine. That's great. It's just again simplicity and how thoughtfully we can show this as well. So Netra Maker, your vision, our focus. Yeah, that's basically उन्होंने अपना डिजाइन करवाया था, तो this the write up was already with them. बहुत सही है, लेकिन by default tagline is very It's crisp. very appropriate. Cool है. Okay, what else?
ये कॉस्मेटिक डीलर है, उनके लिए मैं बना रही हूँ अभी. इट हैज नॉट बीन फाइनलाइज्ड येट बिकॉज आई थिंक पीपल इन हिज फैमिली आर नॉट वेल राइट नाउ. कोविड हो गया है कुछ ऐसे ना, तो ही इज पुट इट ऑन होल्ड राइट नाउ. तो ओके. ही वांटेड कुछ पैराडाइज एंटरप्राइजेस है उनका नाम. एंड ऑल्दो मैंने उनको ये ऑप्शंस दी थी पहले, बट ही सेड कि इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ऑल्दो आई टोल्ड हिम कि आप बस एक डीलर हो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. लाइक डिस्ट्रीब्यूटर है वो, यू नो, हु सप्लाइज कॉस्मेटिक टू शॉप्स. बट देन ही सेड कि उनको एंड उनको तो प्रिंट भी नहीं करना. लाइक इट्स ओनली गोइंग टू बी ऑन हिज लेटर पैड्स एंड यू नो बिल्स. तो उसके लिए मुझे ये वाला बेटर लगा था. दिस इज वेरी थिन एंड मिनिमलिस्टिक. बट वो कह रहे थे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, एड लिपस्टिक्स एंड ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस, दिस एंड दैट. तो मेरे को वो तो बहुत ही ज्यादा लग रहा था कि कैसे आएगा, इट वोंट लुक नाइस. तो दिस इज व्हाट आई डिड. आई जस्ट ट्राई टू प्ले विद द लिपस्टिक. सो The आई डोंट top नो right व्हाट. is still soothing to eyes. The top, extreme top right. The pastels and cosme. Yeah, yeah. Comparatively. What about the this one, the lipsticks wala, And the bottom right. And the bottom right. this one? Yeah, but I don't know how this overlap will function again. Again, this will be a complicated one where it will always need a white base background and all that. So this will need some background to it. Like if you want to place this logo on a brochure, so it should always have a white background. So ये सब ध्यान देना होगा. बस बाकी तो सही है. But yeah, as I said, if you see the case studies or you were part of the workshop, I've shared some agencies with you. If you remember those days, on that day, you check their case studies. See if they are working on a cosmetic label, why it is so simple, or why how simply they are able to communicate that. You saw that Shrey Doshi thing where a cinematographer or a photographer has that dot and how the dot is as a Yes, that is so. I know तभी, and I was the one to ask you, you know, कि जब लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये डिजाइन है. पिच करना You पड़ता है. वो तो पिच करना पड़ता है. वो तो बिल्कुल उन्हें पिच किया, उन्हें विजुअल्स दिखाए, विजन दिखाया तो समझ आया वैसे. that's so right. So And my agenda stays the same. last one. So I made this for my own page. I All thought right. like now and I said, what do you have to say about this? ना complicated. इसको भी one use one font and decide why people should come to Naman, who is Naman, and define yourself over here, showcase your personality over here. वो कहीं ना कहीं if you are very bold and pompous in your communication, if you are somebody who is very, so वो दिखाओ. यहाँ पे THE कुछ अलग है, ग्राफिक कुछ अलग है, कला कुछ अलग है. So it's like a combination of, so usually कैसे होता है कि if you're let's say NAMAN, okay, so or the graphic color, ठीक है, so GRAPHIC, and इसमें if you are telling people that I help you differentiate your business from the others in the market, and सिर्फ the graphic color में आपका I एक color का है, that's it. So इसमें क्या हो जाता है, वो I becomes an identity and how I help you differentiate from the rest. So ये हुआ एक तरीका, एक approach के if you are doing it for the graphic color, the graphic color will have same font, everything. Elon Musk की है The Boring Company. ऐसी उसकी एक कंपनी है by the way. So The Boring Company का O में ही सिर्फ उसने एक flat circle रखा है, and because they are into some क्या सबवेज बोल सकते हैं जो अंडरग्राउंड रास्ते निकलते हैं, तो वो so So just he's check that. making that, yeah, the fast something train. Hyper loop, yeah, something, yeah. Yes, yes. So वो अचानक, so simply the boring company याद आ गई मुझे the graphic कला से, and इतना simplified single typography thing, but उसमें एक तो ऐसा एक ही element, जैसे I का मैंने example दिया, it's taken, but just आपको explain करने के लिए बोल रहा हूँ कि I को ही एक कलर दे, the graphic कला में सिर्फ I रेड है बस खत्म. So now I क्यों रेड है, because वो differentiate हो रहा है from everything, and I is also stands for identity. So ऐसे, and then that I can be an element you can play with for your social media, your own profile or your own visiting card, so something like that. Super. All right.
to work on this one. अभी तो बस इसलिए था because you know I was without a name. I was just working with people. तो फिर अब I felt the quick need to you know show my work on different platforms to get work. तो इसलिए मैंने फिलहाल जो भी फटाफट अच्छा समझ आया वो बनाया. But I know कि I Keep going, guys. This is great. Like, keep going and appreciate your you guys sharing your work, being receptive to feedbacks, and it's always a learning experience for me as well from you guys because I get to see a lot of cool stuff happening. So superb, guys, and let's stay connected and check more stuff on social media. I'm sure they will also answer your queries further. ठीक है चलो take care guys, we'll catch up again. Thank you so Bye. much for your insights on all of these things. Thank you. Peace. Yeah, bye, thank you, good night, take care.